अगर सिर्फ एक जगह अगर हमारे को इन्वेस्ट करना है तो उनसा उसका आंसर क्या होगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। आजकल इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हम खुद ही जब हमारे पास कोई इन्वेस्टर आता है या हम अगर किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वी टॉक अबाउट मेनली 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एट रिटेल लेवल। आई एम सेइंग अगर इक्विटी की बात ही करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईटीएफ्स की, पैसा ईटीएफ्स में लगाओ। सेकंड हम बात करते हैं मॉडल फंड्स की। थर्ड हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। फिफ्थ बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स की। तो दीज आर द 4 places वेयर यू कैन इन्वेस्ट, बट विद इन दीज 4 places अगर आपको सिर्फ एक ही फंड या एक ही टाइप को चूज करना है तो कौन सा टाइप हो सकता है, हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ 5 to 10 minutes वीडियो, वॉच टिल द वेरी एंड, क्योंकि हम उसका आंसर आपको एट द एंड बताने वाले हैं। कौन सी एक जगह है जहाँ पे आप अपना पैसा लगा सकते हो टू क्रिएट वेल्थ फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बट जस्ट टू कवर अप ऑन दीज 4 थिंग्स, ईटीएफ्स बेसिकली 4 टाइप के ईटीएफ्स होते हैं। ब्रॉड बेस्ड ईटीएफ्स होता है, सेक्टर बेस्ड ईटीएफ होता है, थीमेटिक बेस्ड ईटीएफ होता है और स्ट्रेटेजी बेस्ड ईटीएफ होता है। तो 4 टाइप्स, 1 2 4। मॉडल फंड्स आर बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे आपको RIA रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स होती हैं जो कि एक इन्वेस्टर का पैसा संभालता है और 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख का टिकट साइज होता है। आजकल तो 1-1 लाख का भी मॉडल फंड आने लगा है। 10,000 25,000 रुपये की SIP आप कर सकते हो। स्मॉल कैप के, मिड कैप के, थीमेटिक्स, मल्टी कैप्स, ये सारे मॉडल फंड्स आपको मिल जाते हैं। कोई कोई प्लेटफॉर्म्स पे ही मिलते हैं, इट्स नॉट यूनिवर्सल। म्यूचुअल फंड्स ऑलमोस्ट 34 या 37 कैटेगरीज हैं जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ब्रॉडली डेट कैटेगरी होती है, हाइब्रिड होती है एंड इक्विटी होती है। डायरेक्ट स्टॉक्स की बात करी जाए तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड देन पेनी स्टॉक्स की भी बातें होती हैं स्टॉक्स व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट स्टॉक्स। बट आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की, जहाँ पे यदि आपको टू स्टार्ट विथ और मे बी टू एंड विथ, यदि आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अगर अपना पैसा निवेश करना है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी इनटू वन इंस्ट्रूमेंट and that to one category, presenting to you that single category which is called multi cap, जहाँ पे आप अपना स्टार्ट से लेके एंड तक अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को पूरा कर सकते हैं। तो टॉकिंग अबाउट मल्टी कैप, फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन वी हैव कंसिडर्ड ऑलमोस्ट अ यूनिवर्स ऑफ 152 म्यूचुअल फंड स्कीम्स विच फॉल अंडर द मल्टी कैप कैटेगरी। इसमें लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज, ट्रूली मल्टी कैप विच इज लार्ज, मिड एंड स्मॉल, फोकस्ड फंड्स which are like a basket of 25 to 50 stocks within the mutual fund industry. There are something called as focus fund जहाँ पे 25 30 50 stocks ही लिए जाते हैं फंड मैनेजर के द्वारा। फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज जहाँ पे फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे the fund manager has the rights or the privilege to choose how much to put in large, how much to put in small, how much to put in mid cap. Multi cap category categorically जहाँ पे 25% compulsorily लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में होता है, लास्ट 25% इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर। सो ये सारे के सारे फंड्स इस वाले कैटेगरी में मल्टी कैप में आते हैं। फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन अप्रॉक्सीमेटली 152 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का हमने यूनिवर्स लिया है। यहाँ पे क्विकली कवरिंग अप के हम लोग क्या क्या इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वी वांट टू डिस्कस अबाउट द 152 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ये कब स्टार्ट हुए, इसका AUM कितना है, इनके एक्सपेंस रेशियोज क्या हैं, इनकी NAV क्या है, इनके फंड मैनेजर्स कौन कौन है, इनके एग्जिट लोड्स क्या हैं, इनके एब्सोल्यूट रिटर्न्स फ्रॉम 3 days गोइंग अप टू 1 year इन टर्म्स ऑफ द लेटेस्ट डेटा। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 दिसंबर 2024 को विच इज़ मंडे। तो ये वाला डेटा 13 दिसंबर फ्राइडे को तक ये अपडेटेड है। तो इट्स द लेटेस्ट डेटा विच वी शोइंग यू। तो 1 साल तक एब्सोल्यूट रिटर्न बता रहे हैं, उसके साथ साथ CAGR रिटर्न 1 साल से लेके 10 years तक एंड इवन सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो वो भी बात करेंगे कि हमने स्टार्टिंग डेट क्या उठाई है। उसके साथ साथ रैंक्स की बात करेंगे, 3 दिन की रैंक, 7 दिन की रैंक, 1 महीना, फॉर दैट मैटर सिंस इंसेप्शन तक रैंक की बात करेंगे। फिर वी विल टॉक अबाउट सम एनुअलाइज्ड रेशियोज लाइक अल्फा, शार्पे, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेटेड एवरेज। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि ये सारे जो मल्टी कैप फंड्स हैं ये एक्चुअली अंडरलाइन कितना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड डेट या अदर्स में, कैश में कितना लोग इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। तो ये सारी बातें करेंगे। उसके साथ साथ कुछ कंपेरिजन की बातें करेंगे बिटवीन दीज मल्टी कैप फंड्स एंड द रिस्पेक्टिव इंडाइसेस जिसके अगेंस्ट ये कंपेरिजन होता है। तो इंडाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी 200, निफ्टी 500, BSE 200, BSE 500 एंड BSE ऑल कैप, ये सारे हमारे इंडाइसेस हैं जिसके हम रिटर्न्स आपको बताने वाले हैं।
तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टे टिल दी वेरी एंड, क्योंकि उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कौन से मल्टी कैप्स फंड आपको चूज करने चाहिए, कैसे चूज करने चाहिए. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड एंड ऑब्वियसली कीप वॉचिंग, डो नॉट स्किप टिल एंड जम्प टू द लास्ट, बिकॉज बीच बीच में जो हम बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आखिर तक सुनने के लिए. तो स्टार्टिंग विथ द यूनिवर्स ऑफ 152, ये सारे 152 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, नो पर्टिकुलर ऑर्डर, इट इज़ जस्ट कि हमने तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगा रखा है, तो इट डजंट मीन कि ये टॉप पे है तो ये बेस्ट स्कीम है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ये सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा हुआ है. यहाँ पे जस्ट टू शोकेस यू इंसेप्शन डेट्स, तो सबसे पहले जो यू कैन से ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो टाटा लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप की है, जो कि फेब 1993 में ऑलमोस्ट क्लोज टू 30 ईयर्स, 30 साल पुराना. तो देर आर लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स व्हिच हैव एक्चुअली कंप्लीटेड सिल्वर जुबली, व्हिच इज 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनके. यहाँ पे एयूएम की बात करेंगे एंड द लेटेस्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट, द न्यूएस्ट इज 30 अक्टूबर, हीलियोस लार्ज एंड मिड कैप फंड का है, जस्ट 2 महीने पहले. एयूएम की बात करेंगे तो लार्जेस्ट इज बाय पराग पारिक फ्लेक्सी कैप विच ऑफ 84,640 करोड़ एज वी स्पीक, followed by HDFC Flexi Cap and Kotak Flexi Cap of 66,000 and 51,000 करोड़. Expense ratio की बात करेंगे तो it is approximately 2.5 from Taurus LIC and the least is Quantum, Parag Parik and HDFC. जैसे से AUM साइज में बढ़ता है तो expense ratio कम होता रहता है. However, the good part is SEBI has, as per the SEBI guidelines, 2.5% is the highest expense ratio which a fund manager can charge. NAV अगर हम देखेंगे, smallest NAV is that of PGIM India Multicap, which was launched in September 2024 to 9.87, और largest is 1905 which is from HDFC Flexi Cap. तो almost आप देख सकते हो कि 190 टाइम्स वेल्थ क्रिएशन ऑलरेडी ये कर चुकी है, अज्यूमिंग कि इसका स्टार्टिंग NAV 10 रुपीज़ होगा. ये ऑलमोस्ट अगेन क्लोज टू 29 ईयर्स पुरानी स्कीम. तो मूविंग ऑन, ये एग्जिट लोड्स हैं. एग्जिट लोड मतलब कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका पैसा अगर आप निकालते हो, 1 साल से पहले निकालते हो तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, 1 साल के बाद निकालते हो तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा. कोई स्कीम्स में 90 दिन का एग्जिट लोड होता है, क्राइटेरिया होता है, विच मीन्स 90 डेज के बाद 3 महीने बाद निकालोगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा. किसी में 10% ऑफ द यूनिट्स तक आप निकालते हो तो कोई पैसा नहीं लगेगा, विच मीन्स आप SWP विड्रॉल प्लान भी आप ऐसे वाले स्कीम्स में कर सकते हो, एंड 10% ऑफ द यूनिट्स तक कोई भी आपका एग्जिट लोड नहीं लगेगा, उसके बाद 1% लगेगा, सो एंड सो फोर्थ. यहाँ पे 0.1% भी है किसी की. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्कीम टू स्कीम बेसिस. ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात है तो वील डायरेक्टली जंप टू से 1 मंथ का अगर हम डेटा देखें तो बेस्ट रिटर्न इज फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड. लास्ट 1 मंथ इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 11.74%. इन द लीस्ट रिटर्न इज फ्रॉम क्वांट फोकस फंड्स. तो दिस इज 1 मंथ डेटा. इसी को अगर हम 6 महीने की नजर से देखेंगे, लार्जेस्ट अगेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 23% लास्ट 6 मंथ. एब्सोल्यूट मीन्स इसका किसी ने 1 लाख रुपये डाला है तो 1,23,000 रुपये हो चुका होगा. द लीस्ट इज क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड -5%. so that is how important is in terms of the choice of selection of mutual fund. बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा पास्ट रिटर्न्स के हिसाब से हम कोई स्कीम ले लेंगे और उसको उसके भरोसे हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता माय फ्रेंड्स. यू हैव टू लुक एट द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल. 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, लार्जेस्ट रिटर्न इज 52% अगेन बाय मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप एंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, फॉलोड बाय इन्वेस्को एंड HSBC. Smallest return, the least return is from Samco and Nippon India from a 1 year. यही फास्ट फॉरवर्ड अगर हम इसको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 5 साल के पॉइंट, लार्जेस्ट CAGR रिटर्न इज क्वांट फ्लेक्सी कैप, SBI एंड क्वांट एक्टिव 30 and 29%. द लीस्ट इन 5 years is 12, 14 and 15% फ्रॉम एक्सिस, मोतीलाल एंड LIC. तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि हाउ विनर्स रोटेट एंड हाउ लूजर्स अपग्रेड देमसेल्व्स. यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी. 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 19% का CAGR रिटर्न है. द लोएस्ट इज 9.89 फ्रॉम LIC फंड फ्लेक्सी. सिंस इंसेप्शन हम बात करें, वाइल ये कंपेयर करना जरूरी मतलब सही नहीं होगा क्योंकि सबके इंसेप्शन डेट अलग अलग है, बट जस्ट टू सेंस 48% हाईएस्ट है एंड द लीस्ट इज -1 इसलिए है क्योंकि इसका फंड अभी जस्ट सितंबर 2024 को ही लॉन्च हुआ है. तो सिंस इंसेप्शन देखना थोड़ा सा गलत हो जाता है. तो 10 ईयर इज अ गुड हिस्ट्री टेक केयर ऑफ. ई पे अगर हम एवरेज की बात करें, 152 स्कीम्स की एवरेज की 10 साल के एवरेज की, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15%, मतलब 15% मोटा मोटा आप मान सकते हो. और यही जो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था इंडाइसिस की, इंडाइसिस का एवरेज देखोगे 10 साल का तो 12, 13, 14% है. तो क्लियरली
आप देख सकते हो एक्टिव बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैव आउट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव इंडाइसेस। सो बहुत से जगह जहाँ पे हमारे को ये देखने को मिलता है कि इंडाइसेस आर ऑलवेज आउट परफॉर्मिंग एक्टिव फंड्स, ऐसा नहीं है माय फ्रेंड। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कौन सा फंड चूज करा है। तो यहाँ पे आप देखोगे मेजरली देयर इज अ आउट परफॉर्मेंस इन दी एक्टिव फंड्स, दैट इज व्हाट दी फंड मैनेजर्स आर पेड फॉर। मूविंग ऑन टू द रैंकिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो खैर दिन ब दिन की रैंकिंग है। वी ऑल्सो रिलीज क्वार्टाइल रैंकिंग जो हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर 9 महीने, हर 12 महीने आप कंपेयर कर सकते हो वेदर योर फंड और इन्वेस्टमेंट्स इन पर्टिकुलर फंड इज इन द बेस्ट क्वार्टाइल और नॉट। तो ये रैंकिंग्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 साल की रैंकिंग के हिसाब से तो रैंक 1 पे हैं, दैट इज मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल एंड सम रैंक पे वो सैमको निपॉन। यही अगर आप 10 साल के रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, ये क्वांट क्वांट ग्रे है एंड दिस आईसी टॉरस एंड बंधन, दिस फ्रॉम द रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। Alpha, Sharpe standard deviation, the alpha is simply outperformance from a particular index. So अगर आप देखोगे the maximum alpha a particular mutual fund has given is Yours, White Oak and so clearly the new entrants, जैसे कि Yours is a new entrant, White Oak, so Capital is a new entrant in the mutual fund domain. So they have been outperformance, they come up with new ideas, they come up with fund studies. So that is why just by looking at the history or just by looking at old fund managers may not work. In the future we'll have to adapt and accept new fund managers as well. And these are new fund houses, but they are the fund managers, they have approximately 15, 25, 30 years of mutual fund industry experience. It is just that the fund has been launched now. Sharpe ratio is the risk adjusted return from the, you can say, excess returns what a fund manager can generate by taking a unit risk. So the highest is again Helios. So anything above 1 is considered good, above 2 is considered very good, above 3 is considered excellent. So all these between 18 to say here, so these are like considered very very good. So Sharpe ratio, the higher the Sharpe ratio, the better it is considered. Standard deviation, so this might give you some volatile swings, this might give you some volatility in your mind, because this donates that how much can it deviate from its average. So if the average return is say 15%, so this can actually go 15 plus 26, 15 minus 26. That is how standard deviation works. So obviously this can be taken positively also, it can be taken in a negative annotation as well. Beta is the volatility attached to it. So somebody who is having twice the beta, which means they have the potential to give you twice the return of the average or the twice the return of the index, and similarly it can also go down twice the times index. So again, if you are looking for safety first and returns later, then you should the low volatile mutual fund. So this is a very important step, which is large, mid and small cap. So again, between the multi-cap, just by the category, you don't know how aggressive or how moderate or how conservative a mutual fund is. So simply this can be a good measure. So somebody who has a large exposure in the large cap space can be considered more conservative and more safe compared to somebody who has a high ratio in the or high allocation in the small cap space. Obviously somebody who's wanting aggressive returns and the markets are quite reasonably priced whereas small and mid cap are concerned, then one can take allocation in a particular mutual fund or a multi-cap fund where the allocation of mid cap and small cap is higher as compared to large cap. So that was a little bit on the multi-cap space. Now just to give you a sense as to what I was trying to tell you at the end, that how do you choose a particular mutual fund. So one is something called as fact sheet. So what you need to simply do is after reading, after going or after shortlisting few schemes, whether it is from 3 different fund houses or 5 different fund houses, the idea is if you have to invest in a multi-cap fund, do not invest in one particular AMC, choose 3 to 5 mutual fund companies, and within that probably see if there are no overlaps. What happens is that supposedly you choose one scheme or scheme 5, so underlying sectors, underlying stocks, especially the top sectors, top 10 stocks. So these all can be found in something called as fact sheets. You can read those fact sheets I mentioned earlier. Read those fact sheets, check out for the top 3 sectors, top 10 stocks within those 3, 4, 5 shortlisted mutual fund schemes, and then see which has the least overlap, so that actually your portfolio can be truly diversified. So that's the trick how you can invest in mutual funds. Obviously if you do not want to get bothered about how to choose the right mutual funds for you,
then you can obviously contact us on these given below numbers, and you can also book a call, one-to-one call, strategy call with us. Then we leave a Calendly link in the description box, so you can click on that and book a strategy call with us, and we'll be happy to guide you, help you in terms of how do you choose the best mutual fund scheme, because we are registered and we distributors as Association Mutual Funds of India, so we have a ARN code and we are registered mutual fund distributors in India, so we'll be more than happy to you in terms of shortlist or guiding you how to choose a mutual fund scheme best is on your best requirement profile and so on and so forth. Just giving you some calculations basis on this. Now, assuming that it's a 15% return over a period of time, we saw a 10-year average is here, approximately 14 to 15%. So I'm taking a 15% for the sake of calculation. So if you do a SIP say of 5,000 for a period of 10 years, assuming a 15, so this is what you get, 65 lakh rupees. And given that if you do a 10 lakh fee of lump sum, and for 10 years with an factor 40 lakhs, so 40 lakhs plus 65 lakhs, so 25,000 rupee of SIP, 25K SIP plus 10 lakh rupee lump sum for 10 years. Oh, get 1 crore plus. So that's the formula for becoming a crorepati via the multi-cap fund. 25,000 rupees of SIP, 10 lakh rupees of lump sum for a period of 10 years, assuming 15% year return, can make just a crorepati. So that was a little bit from our side on today's video. In case you think we did a good job, do like, share this video with as many people as possible, and do not forget to subscribe to our channel. Till then,